नमस्कार। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे हर क्षेत्र में गुरु का क्या स्थान है, ये हम सब जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अब बहुत कुछ कहा जा चुका है गुरुओं के बारे में, लेकिन मुझे अगर गुरु का कोई सही वर्णन किसी ने किया है तो कबीर जी की दो पंक्तियां, उनका एक दोहा याद आता है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी जाऊं गुरु पे, जिन गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस हस्ती को लेके आया हूं, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू इंट्रोड्यूस हिम। फिर भी मैं उनका नाम बताऊंगा। उनका नाम है parmanandsharma जी, पीएन शर्मा जी हम कहते हैं। मेरे गुरु थे वो। इस कॉलेज के, धर्मशाला कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और इंग्लिश के लेक्चरर थे। बहुत बड़ा उनका कैरियर रहा है। सिर्फ मैं 3 चीजें उनके बारे में बताऊंगा, फिर उनके मुंह से सुनेंगे उनकी जीवनी के बारे में। एक तो अपनी उम्र के 100वें साल में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 100th ईयर ऑफ हिज लाइफ। आज भी वही रुआब है उनकी आवाज में, वही प्रेम है उनकी बातों में, और ज्ञान की तो खैर आप पूछिए नहीं, भंडार है। दूसरी मैं बात उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो दलाई लामा जी के पर्सनल फ्रेंड हैं। हिज हाइनेस दलाई लामा, जो तिब्बतियन गुरु हैं, उनके पर्सनल फ्रेंड हैं। और नेहरू जी से भी उनका बड़ा नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे इस देश के, उनसे बड़ा गहरा नाता इनका रह चुका है। तो लीजिए, मिलिए परमानंद शर्मा जी से, मेरे गुरु हैं। The questionnaire that is before me is quite comprehensive, spanning almost entire life. We had a Maulvi Sahib who used to travel 5 miles to our Hindu school, then teach in the local Islamia school. You can understand what sort of man he was. He was a poet, and he was what was called an Ustad poet, Maulana Muhammad Ali Agaz Jalandhari. It is he who became the reason why for my interest in writing Urdu poetry. I started with Urdu poems. Our educational career spanned the whole of most of years of India's struggle for independence. Therefore, we mostly wrote on patriotic topics, patriotic poems. And therefore, I would like to pay my tribute to that late Maulvi Sahib, who was a drawing master, not a Maulvi. But in school he used to teach drawing, and he had the portraits drawn by himself of great Urdu poets in his drawing room. Yes. As far as spiti elections are concerned, they're a very unique thing. Can you imagine that they walked for more than 400 miles? Rampur Shahar, through an entire Kinnaur, part of Lahul, part of Spiti, up to Manali. That is Rampur Shahar to Manali, the entire circuit. Of course, I was not a leader of the party because I was not a gazette officer. The government used to make this decision. The leader was excise officer who was a gazette officer. I was a class 3 officer with, of course, NCC lieutenant
I was deputy leader of the whole expedition. Although I was leading the expedition, I was leading group. There were two groups, A and B. Mine was B. I was leading. So that whatever difficulties came, I had to undergo them and then they would follow it. Aram se they would follow. So we were on our legs for about 400 miles, more than 400 miles, for 54 days. 54 days we traveled on foot, set up our tents, take them, roll them again, and next morning load them over mules. And we had 125 mules as a woman. That's my book. My book's title is Men and Mules on a Mission of Democracy. But for the mules, it is impossible. It was impossible for anybody to have completed. And we grew beards, and there was no haircut. Chula bridges. We had to cross a lot of chula bridges, hanging and shaking. At a particular place, Losar, there was a chula bridge which was not even made of ropes. There were no ropes. There was a juniper creeper that had been rolled into a rope type thing, and one under your feet, two sides. Everybody was afraid that this is a dangerous chula. So I said I will lead. The leader should lead. He should be working from the front. So I said, I'll cross that chula first, then you will follow me. First I sat down and had a cigarette smoke. Then I started down that chula. Chula would roll like this. And I crossed, and then every one of my boys, they also crossed, because the leader had led. He led by example. This is what we had taught in the military, because I had NCC training also. I was a lieutenant in NCC then. And we had our 12-week NCC pre-commission training at the 17th Dogra Regimental Center, where we had a man who was a Victoria Cross holder, a VC. Everybody would call him VC Saab. He was a holdar. So many things. As far as my meeting with Pandit Jawaharlal is concerned, they are memorable moments. Jawaharlal used to come to Manali. He came to Manali, and I wrote a request to him to give me an interview. He wrote back that he would be leaving Manali on such and such date, but before that, on such date, you can come either in the morning or in the evening. But because then I wrote back that I would be coming in the morning, in the afternoon. It was confirmed. I went to Manali, stayed there with a friend, and then went to the forest rest house
Manali. It's where he used to stay. There was nothing further off. It was at 4 p.m. that my interview started. Jawaharlal was a lovely person. I never served him. I always said, Pandit ji, आप, और वो मुझे तुम कह रहा है. 4 o'clock. Then he looked at the watch. It was 4:50. In the meantime, Indira Gandhi, who was a nobody then, just his daughter, she came, looked out of the door, went back. Again came, went back. She could not. When it was 4:50, she said, आपने वो 4 अमेरिकन को टाइम दिया हुआ था, आप भूल ही गए. फिर then Jawaharlal, अच्छा, oh, अच्छा. Then he closed my manuscript. He was going to parts of the manuscript. I had a second chance to have an interview with Panditji, Jawaharlal. That was in the morning, 10 o'clock. Now, you know, from the road to the Manali rest house where he is staying, it is not much distance, but there are thousands and thousands of CID people sitting unseen near the bushes or under the edge. So they were checking me at every point. Panditji shouts from there. Panditji सैर करके आया है, कुल्लू कैप पहनी हुई है और बरामदे में घूम रहे हैं. पंडित जी बोलते दूर से, भेजो, जल्दी भेजो. वो कहे महाराज जाओ. अभी मैं इतनी दूर था, 3 दूर बेटी है. कैसे हो, ठीक हो? फिर बैठ गए. सो मुझे पंडित जी पूछते हैं कि अभी तुम धर्मशाला से आ रहे हो या नाभा से? मेरी उसी ट्रांसफर नाभा की थी. पंडित जी न्यू नाभा, पंडित जी नाभा जेल में रहे थे या नाभा से? मैंने कहा नहीं पंडित जी, मैं तो अभी धर्मशाला में हूँ, अभी वहाँ गया नहीं हूँ. फिर वो सोचने लग गए. देखो एक बार उनके मन में आया कि मैं कहूँ, सोचने लग गए. छोटी सी बात है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता. मैंने कहा जी पंडित जी आपने पूछा तो मैंने बताया. You cannot say more than that he is a personal friend of mine. Very, very personal. And he is very, very kind to me. During our first interview, as I got up, I said, Your Holiness, your name means ocean of learning, Dalai Lama. Well, no, just a drop. He had a great sense of humor and a great sense of melody. I don't know, I can write books on him. My interviews with him, lots. There's no dearth. There's that photograph on my 90th birthday. 90th, Upar wala. And the other one is
my elder son, right? Myself, I am presenting my autobiography to him, My Mountain and My Valley. My autobiography I have written. Professor Samdang Rinpoche has written a beautiful foreword. I didn't ask His Holiness for the foreword. My mountain and my valley. And whenever His Holiness New Year comes, His Holiness sends a lot of gifts for children, for other. You cannot imagine. One Sri Sathyasaibaba, I had an interview with him. I used to go as a Seva volunteer for 7-8 years. 6 hours duty on the road. And also, we had a group interview with him. Then an individual interview. This Hariman was with Vijay Chota. He was with me when I had a personal interview with His Holy with Bhagwan Saibaba. Imagine, I'll just give you one instance. I used to wonder why followers of Saibaba call him Sai Ram. Why are they taking the name of Ram? In those days, I used to read Valmiki Ramayana. One night I dreamt. It was about 3:30. There's a huge sea of light. Air, earth, atmosphere, there is light. Nothing else. It is an ocean of light. And Sai Baba, Sathyasaibaba is good. That is in the year 1980. Then suddenly the scene changes. That ocean of light, all that is there. Instead of Baba, there is a temple, marble temple, and in front of it is standing Lord Ram, Bhagwan Ram. Because I used to have pain from here traveling. When I saw Bhagwan Ram, he's in white, not in yellow. Pitambar mein nahi hai. I fall at his feet. He runs a hand over me. He says, Utho, utho, sab theek hoga. These words he says 6 months before I meet this Baba, in a personal interview, I can do nothing but cry. Cry. Harimon was also with me. Swami said, I fall at his feet and start crying. He says, Utho, utho, sab theek hoga. The same words Bhagwan Ram had spoken. He says the same word. Utho, utho, sab theek hoga. और जब हम कोई बेवकूफ़ी बात करते थे जैसे आई वांटेड टू लीव दैट अबाउट मेरी झगड़ा रहता था जैसे हमें स्वामी हम रिजाइन करना चाहता बोलता है भगवान बोलते हैं रिजाइन करता 3-4 महीने में फिर और सर्विस करता अभी चिल्ड्रन पढ़ता अब क्या मतलब हुआ ये मैंने कहा स्वामी यही चाइल्ड पढ़ता है मैंने समझा कि मेरे बच्चों कह रहे हैं कि हरिमोहन मेरे साथ थे छोटा जब मैंने कहा स्वामी
यही चाइल्ड पढ़ता। तो स्वामी नोस, जब आप कोई बेवकूफाना बात कहते थे उसका मतलब नहीं बनता था, बात का मतलब और होता है। तो स्वामी बोले स्वामी नोस, कह दिया स्वामी नोस। 4 महीने बाद देखो जी, मैंने एप्लीकेशन रेजिग्नेशन लिख के डिपार्टमेंट के मंदिर में रख के बाबा के चरणों में डिपार्टमेंट को भेज दिया। ड्यूरिंग दोज 4 months, पंडित शिव कुमार, our education minister, had become a great friend of mine. वो भी झगड़े के बाद, उनसे भी झगड़ा हुआ, तब माने। झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने कहा तो इसका कुछ जवाब, मुझे गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया, एक बार उसको रिलीव नहीं किया, नोटिस भेज दिया कि इसको रिलीव क्यों नहीं किया, कोर्ट जो एक्सप्लेन योर कॉन्डक्ट इनडिसिप्लिन। मैंने कहा दिस इज विक्टोरिया सर्टिफिकेट बीइंग गिवन टू मी आफ्टर सो मेनी इयर्स सर्विस। पंडित जी कहते यू शुड हैव गॉट इट। मैं कहा भाई, खैर पंडित जी के साथ काफी बातें हुए, झगड़ा। पंडित कहते यू राइट एनीथिंग राइट। जब पंडित शिव कुमार के पास एज मिनिस्टर मेरा रेजिग्नेशन गया, तो पंडित शिव कुमार एक दिन मिले मुझे अपनी कंस्टिट्यूएंसी जा रहे। मैंने पंडित जी, कहते पंडित जी आपने अपने रेजिग्नेशन दिया था? मैंने कहा नहीं, आई हैव रिटन ए बिग नो, एजुकेशन, आई हैव रिटन ए बिग नो। आपने मुझे नहीं पूछा। मैंने कहा जी इसके लिए क्या पूछना, स्वामी नोज कहा था ना भगवान ने, स्वामी नोज। 3-4 महीने का मतलब ये था कि उससे जारी हो जाएगी। तो बड़े बड़े अजीब एक्सपीरियंस इन लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर इंग्लिश के लेक्चरर थे, लेकिन ये इतने लिटरेरी पर्सन है कि इनकी इंग्लिश के अलावा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पर्शियन पे मास्टरी है। इन्होंने हर विषय में किताब लिखी है। इंग्लिश में अनगिनत किताबें लिखी है इन्होंने। एक किताब इनकी जो अपनी खुद की बायोग्राफी है उसका नाम है माई माउंटेन्स माई वैली। एक जो आपने इंटरव्यू में भी देखा कि स्पीति वैली के इलेक्शंस में किस तरह 54 डेज ये चलते रहे पैदल और म्यूल्स पे, तो वो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मैन एंड म्यूल्स। और इनकी काफी सारी किताबें हैं जो तिब्बतियंस लाइब्रेरी वालों ने पब्लिश की हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही उम्दा, नायाब और रेयर और महंगी पेंटिंग जो है दलाई लामा जी ने खुद अपने हाथों से सर को दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।